पढ़ेंगे। इसमें ट्रीटमेंट है फॉर वेरियस जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका ट्रीटमेंट है, आराम से इसको देखिए। सम पीपल दैट आर अनएबल टू कंसीव चिल्ड्रन और अनएबल टू बेयर चिल्ड्रन, उनका क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन देन दे गो फॉर दिस ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज नॉट लीगलाइज्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये है कि इसमें कुछ कंट्रीज के अंदर ये प्रोसीजर जो है ये चल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबीज का। ठीक है, नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप वाइज आपको बताती हूँ। ठीक है, नंबर 1 व्हाट हैपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल के एग प्रोडक्शन is carried out in the mother's body. Mother's body के अंदर egg production होगी, which is going to be stimulated by some type of hormonal therapies. Hormonal therapy का क्या मतलब है कि all the hormones that are involved in the development of the follicle, the release of the follicle, the extraction of the egg, वो सारा कुछ it is going to be carried out. The egg production is going to be done inside the mother's body, and then the eggs are retrieved from the mother's ovary. ठीक है, they are going to be retrieved from the mother's ovary. Then after that what happens, the sperm sample from the father is going to be, biological parents ने ये चीजें donate करनी है, the eggs and the sperm sample. It is the biological parents that are going to donate these things. The sperm sample will be provided by the father. The eggs and the sperms, they are combined in vitro outside the body to allow fertilization. Now this is carried out in case के mother का uterus जो है, maybe it is faulty, या मे बी इट इज एबनॉर्मल, बिकॉज ऑफ दैट जो है वो मदर का यूट्रस जो है उसके अंदर फर्टाइल, या द एनवायरनमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी इज नॉट सुटेबल, और मे बी the father's tubes have some kind of infection in which the sperms cannot be जो है ना alive when they pass through the जो है ना tubules. तो कोई भी वजह हो सकती है। बहरहाल in vitro fertilization is carried out in a controlled environment. Then the fertilized eggs are introduced into the uterus. The uterus can be the uterus of the mother. If the uterus of the mother is okay, there's no problem with the mother. ठीक है, या it can be the uterus of some surrogate. सरोगेट कौन होता है? सरोगेट जो किराए पे जिसका यूट्रस लिया जाता है ताकि फिर बेबी की डेवलपमेंट जो है वो उस यूट्रस में हो, और ऑन पेमेंट जो है कुछ वर्कर्स, सरोगेट वर्कर्स हैं जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए यूट्रस को, अपना यूट्रस जो है उसको प्रोवाइड करती हैं। बहरहाल दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड और आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरेंटल स्पर्म एंड ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन विट्रो and the zygote is implanted into the mother's uterus most of the time. But in case the mother's uterus is not available, the mother's uterus is not suitable, then it can be implanted into another mother's uterus. The placenta establishes itself and normal, no beta, no vahaj. Placenta establishes itself and normal fetal development occurs and proceeds till birth. ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो आपकी बुक में बताया गया है वो ये है कि मदर की यूट्रस में ही जो है वो इम्प्लांटेशन की गई। मे बी शी हैज सम ब्लॉक्ड टिश्यूज, मे बी शी हैज सम ब्लॉक्ड ट्यूब्स, और मे बी शी हैज सम प्रॉब्लम कि वो एग जो है देयर इज सम malformation inside the upper part of the reproductive tract, so and the uterus is normal. ठीक है, तो ये मदर की यूट्रस में आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है हम देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी स्लाइड है, पूरा टॉपिक इसके अंदर आ गया है पूरा। ओवरीज मॉनिटरिंग एंड इंट्रा ओवेरियन फॉलिकल जो है ना इन विवो हार्मोनल इंडक्शन है। मदर इज गिवन हार्मोन, ओवरी की स्टिमुलेशन होगी बिकॉज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, स्पर्म्स का कलेक्शन बन गया फ्रॉम द फादर, स्पर्म प्रिपरेशन हो गया, फिर उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है अप टू वीक 6, कोशिश की नहीं सॉरी अप टू 48 आवर्स टू 72 आवर्स। फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द मदर्स बॉडी, एंड देन इम्प्लांटेशन जो है वो आफ्टर चेकिंग द मदर्स यूट्रस इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट द मदर्स बॉडी कैन बी जो है वो suitable for the reception. Number 1 देखें दोबारा से, egg production stimulated by hormonal therapy, eggs retrieved from the ovary, sperm sample provided, fertilization, eggs and sperm combined to allow fertilization. ये देखिए, and then यहाँ पर आपके पास जो है वो 48 to 72 hours के बाद it is going to be introduced into the uterus where it is going to be implanted.
ठीक है, ये आपके पास ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं टुवर्ड्स द gestation period. Gestation period in human beings is about 280 days. Secretion of progesterone takes place via the placenta. Amniotic tract contains amniotic fluid, protective in function and absorptive in function. ठीक है, pituitary gland produces a luteinizing hormone. The placenta secretes human placental lactogen. Both hormones stimulate mammary gland development for lactation. This is just some other hormones that are present there. Human embryo is called the fetus after the 3rd month. We have already studied this in the chapter of development. Decrease in hormonal activity of the mother brings about the onset of birth. ठीक है, ये old concept है. अब ये आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट है जो फॉर्मेशन ऑफ बर्थ है. बर्थ का प्रोसेस कैसे हो रहा है ये हमने देखना है. आपकी बुक में ये नहीं है, लेकिन ये पेशावर बोर्ड की किताब के अंदर है. इसको जस्ट राइट इट डाउन विद यू कि हाउ इज द बर्थ प्रोसेस इंड्यूस्ड. द बर्थ प्रोसेस इज होली एंड सोली, यू कैन से इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. ठीक है, हाई डिग्री डेवलपमेंट ऑफ द फीटस जो है उसके बाद आपके पास बर्थ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. हाई डिग्री ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट इन द इनिशिएशन ऑफ द बर्थ प्रोसेस. एंड कौन है यहाँ पर? फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड. समझ लें इस बात को. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फ्रॉम द फीटस, ठीक है, stimulates the adrenal gland and releases the corticosteroids from the fetus. ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन लिख लीजिए, अपनी फ्लो शीट बनाइए. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फ्रॉम द फीटस stimulates the adrenal gland of the fetus and it releases corticosteroids from the adrenal gland of the fetus. These corticosteroids, when they come into the mother's body, they give a feedback for progesterone. अब आप देखें, adrenocorticotropic hormone, corticosteroids, feedback in the mother's body, decrease in the level of progesterone. Decrease in level of progesterone का मतलब ये है decrease in the maintenance of the pregnancy. Now, decrease in the blood of the progesterone in the mother, sheet बनाते जाइए साथ साथ, stimulates the production of oxytocin in the mother. Oxytocin is produced from the mother's जो है वो posterior lobe. It is stored inside the posterior lobe and it comes and it induces labor. Labor क्या है? Is actually the contraction movements that take place in the uterus which pushes out the baby through the birth canal. Due to the induction of oxytocin, what happens? The cervix starts to dilate and the baby is pushed through the birth canal. Now, as the baby's head is pushing against the cervix, what happens? Prostaglandins are also going to be produced. Prostaglandins क्या करते हैं कि जो contractions हैं उसकी power को ज़्यादा करते हैं. And prostaglandins जो है ना labor pains की जो power होती है उसकी intensity को ज़्यादा करते हैं. And these prostaglandins are produced as the baby starts to push down through the birth canal. After the baby is born, the umbilical cord is ligated. काट किया जाता है एंड देन प्लेसेंटा जो है वो पेनलेस बर्थ हो जाती है. प्लेसेंटा के टोटल लॉस ऑफ ब्लड ऑफ द मदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 350 ml. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को देख लीजिए. अनहेल्दी एटीट्यूड्स, लो मोरल वैल्यूज लीड टू सीरियस डिजीजेस सच एज सेक्सुअली एसटीडीज इनको कहा जाता है. गोनोरिया, Neisseria gonorrhea affects the mucous lining of the uterus. MCQ questions. And newborn babies को भी ये हो जाता है अगर मदर को है, sexually transmitted है, unhealthy relationships की वजह से. Syphilis बहुत dangerous है. Treponema pallidum damages the reproductive organs, the eyes, the joints, central nervous system, heart, skin. पागलपन भी हो जाता है इसके अंदर, बहुत dangerous है. Infertility हो जाती है because of syphilis. ठीक है, बहुत गंदी बीमारी है. जेनाइटल herpes, herpes simplex type 2, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. जेनाइटल soreness and ulcers can pass through the placenta and damage the eyes and the central nervous system of the infant. AIDS, acquired immune deficiency syndrome. ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चंस हैं. Name the structures present in the male reproductive system and function. Name the hormone. screenshot ले लीजिए during the female reproductive system. ठीक है, अच्छा जी. Write short notes on these. Sertoli cells, Leydig cells, Breckin follicle, endometrium, fallopian tubes. ठीक है, screenshots लेते जाइए. Total marks 15 हैं. Submit hard copy when you come to college. ठीक है,
ओके बेटा, नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन में हम इंशाल्लाह मसल्स की वर्किंग स्टार्ट